हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंडाकरी। माय नेम इज सौरभ और आज की इस वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करूंगा। ऑलराइट, आई नो दैट अराउंड 40-50% जो इस वीडियो को देखेंगे उन्हें पता होगा, दे माइट बी नोइंग द फॉर्मूलाज एंड ऑल, बट यस यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज इससे होगा क्या, आपको मेमोराइज करने में मे भी कुछ मैं फंडा बता दूं जो आपको फिट कर जाए और एग्जाम आज तक याद रहे। ऑलराइट, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ऑलराइट, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन सी द सब्सक्रिप्शन बटन हेयर, subscribe it, and also press the bell icon for the latest video updates. All right, so let's start now. Okay, this is a little thing about me that basically I used to teach students in my free time. I'm a student come teacher, so it's an initiative by me so that everyone should learn free of cost. All right, so my main motto for this channel, for this YouTube channel is only that कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा रिसोर्सेज, क्वालिटी एजुकेशन मिले जिससे कि आप एक्सेल कर सको। ऑलराइट, एंड मेन थिंग प्लीज सब्सक्राइब करें इसे जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले कि हम और भी वीडियोस डालें। ऑलराइट, so let's start the today's video now. Now as you can see, the first one, trigonometry. All right, so basically trigonometry होता क्या है, what is trigonometry? Quite very simple thing. As a name derived, trigonometry, right? Trigonometry मतलब होता है tri means triangle. Okay, so this is triangle. And ogonometry, this means geometry. Now triangle and geometry, basically triangle is all about sides के बारे में डिस्कशन करता है, and geometry we know this is all about thetas and all. Okay, so basically ये ऐसा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो साइड्स और थीटा को लिंक करता है, साइड्स ट्राइंगल का और थीटा in the case of geometry. All right, so like this case, suppose this is a triangle, this is certain angle given, let's say this is 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter, anything is given. So इस केस में बोलेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री। ऑलराइट, बट मेन थिंग ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हैं आप। तो ट्राइंगल का टाइप राइट एंगल होना चाहिए और कुछ एंगल्स होने चाहिए, उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ओके, एज यू कैन सी दिस ओनली मेन बात, नो बकवास, तो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे हम, कोई फालतू नहीं बोलना है। ऑलराइट, छोटे से छोटे वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ओके, नाउ द मेन थिंग इज दैट इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज पता होनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज दैट पाइथागोरस थ्योरम, व्हिच इज वेरी सिंपल, आई होप सबको पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लाइक दिस साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस this square. And second thing which is quite important, I hope many of you must be knowing this, और नहीं है तो अभी जान लो and try to learn this. Some people have curly brown hair tightly pulled back, right? Just remember it as a sentence, some people have curly brown hair tightly pulled back. Now how you can use it, you can see in the next slide. All right, so let's move to the next slide now. अब आप यहाँ पे as you can see why I have written this, some people have curly brown hair, basically जो S था वो साइन को डिनोट कर रहा था अपना सम। ओके, एंड P इज फॉर पीपल एंड डिवाइडेड बाय हैव, तो सेम है सारे केस में हुआ, सम पीपल हैव, सो S फॉर साइन, सो साइन ए, P फॉर परपेंडिकुलर इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, लेट्स से दिस इज आवर थीटा, लेट्स से दिस ट्राइंगल इज ABC. So and one more thing is that जहाँ कहीं भी थीटा लाई करता है वो आपका बेस बन जाता है। ऑलराइट, सो दिस इज योर बेस, this is your perpendicular and this becomes your hypotenuse. All right, so now this is base, right? Not B vertex, this is a base, this is hypotenuse and this is perpendicular. So basically आपको सब words का small first letters को देखना है and इससे एक formula बनेगा, like some people have, so S is equals to P by H. All right, this is the first formula. Curly brown hairs, curly brown hair, so this is the second formula. Tightly pulled back, so this is the third formula. All right, now most important thing is that इसका उल्टा क्या होता है, राइट right? जैसे कि मैं बोलूँ साइन थीटा जो है उसका अपोजिट क्या होता है, तो साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक थीटा. नाउ यू कैन सी S is equals to P by H and cosec is equals to H by P, so just an inverse of it. All right, so from here you can deduce that sin A is equals to 1 by cosec A, or you can also say that sin A into cosec A इज इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 1 आएगा. ऑलराइट, सेम एज कॉस का जो इनवर्स है वो हो गया सेक, एंड जो टैन का इनवर्स है वो हो गया कॉट, एंड यू कैन सी इन द फॉर्मूलाज. ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम यू कैन राइट ऑल दिस फॉर्मूला इन योर कॉपी और यू कैन मेमोराइज इन योर हेड. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड. नाउ सेकंड इज ऑल अबाउट टैन. टैन जो होता है essentially the ratio of sin theta and cos theta. Sin, you know, this is sin, this thing is cos. So if you divide both the things, like P by H divided by
b by h. Now here one more thing is that कभी भी इस टाइप का एक्सप्रेशन आता है तो बेसिकली फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई होता है, सेकेंड एंड थर्ड मल्टीप्लाई होता है, एंड जो पूरा रिजल्ट है वो बन जाएगा p times h divided by b times h. Now you can see this and this cancels out, and p by b essentially क्या था, tan था. So from here the formula comes tan theta is equals to sin theta by cos theta. Now the opposite of tan is cot, as we have just done. So cot is equals to cos a by sin a. All right, cosec, that's the inverse of sin theta, and sec, that's the inverse of cos theta. So this is quite important, you should know. And also you can see at the top it says that remember this formula for evaluation bole to like you need to find the value of like sin 30 given hai, what is the value of cosec 30, so you can use this reciprocal formula like this. Okay, I know sin 30 value, sin 30 is value is 1 by 2. Okay, I'll tell you all this thing. तो आपको बताना है cosec 30 क्या होगा. तो quite simple that essentially cosec 30 sin का उल्टा हो जाएगा. So 1 by 2 का inverse करोगे तो ये हो जाएगा 2. So like this you should remember for the evaluation purpose and for the proving identities, जो कि काफी ज़्यादा important है. तो I'll tell all these things in the next video. अभी बस आप formula को एक बार recap करो. Alright, so let's move to the next one now. So as you can see the next slide, is all about this angles value, right? So before coming to this angle, let me tell you कि basically quadrant जो होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है. This is our x axis and this is our y axis, alright? But अभी हम इसको x and y पे बात नहीं करेंगे, अभी हम इसको angles के term पे बात करेंगे. Fine. So like let's say this is 0 degree because it's starting from here. This is 90 degree, this is 180 degree, this is 270 degree, and finally it comes to 360 degree because एक periodic function है, repetition होगा, यहाँ से यहाँ का angle 90, as you can see perpendicular. This is also 90, so 90 plus 90 is 180, same as 270 and same as 360. All right. So now मेन थिंग क्या है यहाँ पे. ओके, एक और चीज आप ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है. बेसिकली कभी भी आप एंगल को मेजर करते हो किसी भी चीज के लिए तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर करोगे. सपोज दिस इज अ लाइन, राइट? सो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव इधर होता है तो आपका एंगल फॉर्म होगा ये वाला. डोंट से दिस इज योर एंगल, दिस विल बिकम रॉन्ग. अगर आप नेगेटिव साइड से लोगे देन दिस इज नॉट द एंगल. एंगल जो बनता है वो पॉजिटिव साइड से होता है. ऑलराइट, ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस. अब इसमें बोलता क्या है कि ठीक है, अगर ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है, ये आपका 270 डिग्री है और ये आपका 360 डिग्री है. नाउ इट सेज that first thing is that you should remember this add sugar to coffee. It's a good statement. You should remember simply add sugar to coffee. Again we will use the first letter of this words. A means सारे angle, all positive. All positive means जितने भी angle है like sin, cos, tan and its inverse, right? सारे positive होंगे यहाँ पे. So you can see जितने भी angle हमने यहाँ पे 0 से 90 के बीच में बनाया, you cannot find single negative here. सारे positive है. Maybe it can be not defined, but सारे positive ही है. It cannot be minus infinity. Alright. From 90 to 180 सिर्फ sin positive होता है and therefore its opposite cosine positive. Alright. So sin and cosine is only positive in the interval of 90 to 180. Okay. And same as T means tan opposite cot. So between 180 to 270, tan and cot positive, and between 270 to 360, cos and sec positive. Yeah, these are least important. Why? Because these are not covered in 10. So you can leave this part. But yes, you should remember till between 0 to 90 that all the angles are strictly positive. Alright. Now you can see this formula, this value chart. The sin 0 is 0, sin 30 is 1 by 2, sin 45 is root 2, 1 by root 2. Alright, so all these are the values. So I'll tell you how to recap this or how to memorize this. Okay, so in the next slide I'll tell you these things. No need to memorize it. Just whatever the values are, before the exam starts, draw this chart in your answer sheet, and whatever the values are, just pick from there. Alright, so सबसे पहला like basically आपको ना angles के values को डालना है. जैसे कि मान लो ये sin theta है. Let's say this is your cos theta, this is your tan theta. Right, so what is the inverse of sin theta? This is your cosec theta. Cos theta ka inverse, this is your sec theta. And tan theta ka inverse, this is your cot theta. All right, and now I'm writing all the angles here. So this is 0 degree, this is 30 degree, this is 45 degree, this is 60 degree, and this is finally 90 degree. This is for extra part. Okay, so start कैसे करोगे? Basically sin function जो होता है वो increasing function होता है. Increasing function मतलब if you draw a graph, let's say this is your x-axis, this is your y-axis. If you draw any graph, if it approaches to the positive direction, all right, and increases in the respective y-axis, so we call it as an increasing graph. All right,
तो साइन का जो ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग होता है। अब इससे हमारा क्या मतलब, इससे मतलब है कि अगर इंक्रीजिंग ग्राफ होता है तो जो कोई भी वैल्यू होगा टिल 0 to 90 वो बढ़ता जाएगा। एंड यू कैन सी सबसे पहला जो साइन का वैल्यू होता था वो 0 होता था। तो आप इसको मेमोराइज ऐसे करोगे, जस्ट ड्रॉ लाइक स्क्वायर रूट टू ऑल दिस केसेस, दिस इज द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट डालने के बाद जस्ट राइट at the base 4 to all the square root. In short, the denominator is coming out to be 4. एंड आपको स्टार्ट करना है 0 से। ऑलराइट, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। नाउ क्वाइट सिंपल, आप सॉल्व कर सकते हो उसे, कोई बड़ा चीज नहीं है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 by 4? दिस इज कमिंग आउट टू बी 0। नाउ हियर 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, सो दिस इज 1 by 2। 2 का स्क्वायर रूट वी डोंट नो, बट स्टिल यू कैन कैंसिल दिस आउट। सो 2 on 2 टाइम्स, अब 1 by रूट 2 बन गया। आपको इसको 1.414 नहीं लिखना। नाउ अगेन रूट 3, इट्स एन इरेशनल नंबर। रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 by 4, दिस इज नथिंग बट 1। Now, most important thing is that in the case of cos, the function or the graph is decreasing. अब decreasing है तो उल्टा होगा, so you have not to do anything, बस उल्टा कर दो जो कुछ भी आपने mention किया है। तो जो sin 90 था becomes cos 0, sin 60 which is root 3 by 2, this will be root 3 by 2 in the case of 30। अब 45 तो same हो गया है, okay, 30 1 by 2 and sin 0 this is coming out to be 0। okay, so बस आपको एक चीज को मेमोराइज करना है and you'll get everything। alright, now the third thing, tan निकालना है। तो जस्ट मैंने बताया था कि tan बेसिकली क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा का रेशियो होता है। okay, so 0 by 1 तो it will be 0। now 1 by 2 and root 3 by 2, so what it will be, it will be 1 by root 3। वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना जो भी जस्ट बताया। 1 by 2 root 3 by 2, कभी भी ऐसा होगा तो first multiply to the last, second multiply to the third, so it will be 2 into 1 divided by 2 times root 3। 2 and 2 cancel out, so it becomes 1 by root 3। okay, so I'm going little faster, आप इसको अच्छे से कर लेना and try to memorize it in your head। okay, the third thing है यहाँ पे tan 45। so again 1 by root 2, 1 by root 2 cancel out, 1, 60, this is root 3 by 2, this is 1 by 2, it will be root 3। and now this is very important, देखो 0 by 1 and 1 by 0, there's a difference। okay, so maybe many of you know this। 0 by 1 basically क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर में 0 को छोड़ के any number is there, the answer is coming out to be 0 if the numerator is 0। and if the denominator is 0, whatsoever the number is in numerator, don't care about that, always you will get infinity। if there is minus, so it will be minus infinity। if this is plus, so this will be plus infinity। like what is 10 by 0? this is coming out to be infinity, plus that, that's why this is positive। all right, so you should remember this। अब यहाँ पे देखो, आप tan 90 के बारे में खुद ही बताओगे। so tan 90 is essentially 1 by 0, and just now मैंने बताया what is 1 by 0। 1 by 0 क्या होता है, so 1 by 0 basically क्या होता है, infinity। so most of the books में देखोगे वो not defined होता है और infinity, that means the same। now cosec is the inverse of sin, so again 1 0 है यहाँ पे, आप इसको उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 1 by 0 which is not defined, so it will be infinity। 1 by 2 का उल्टा 2, 1 by root 2 का उल्टा root 2, रूट 3 by 2 का उल्टा 2 by root 3, एंड 1 का अपोजिट उल्टा मतलब रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। सेम एज cos 1, दिस इज 2 by root 3। 1 by root 2 becomes root 2, 1 by 2 becomes 2, and 0 का opposite that becomes infinity। Getting this point? यहाँ पे infinity, यहाँ पे infinity, and यहाँ पे infinity। In the case of tan again, cot में infinity हो जाएगा, again इसका reciprocal है, so this will be infinity। Alright, 1 by root 3 inverse root 3, 1 inverse 1 root 3, which is 1 by root 3, and the last part which is 1 by infinity। this is important। so कभी भी 1 by infinity होगा then the value is coming always 0। कभी भी infinity डिनोमिनेटर में होगा तो वैल्यू 0 ही होगा, so this is 0। alright, कुछ रीजंस है इसमें, नहीं मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में उसे बताऊंगा, बट अभी आपको जरूरी नहीं है जानना ये क्यों होता है। यू शुड रिमेंबर कि वैल्यूज क्या होते हैं। alright, so now let's move to the next one now। so this is the next page, as you can see, just okay, yes, this is the last page of my formula sheet, and this is the complementary angle formula। अब देखो ध्यान से, कभी भी 90 का बेस आप लगाओगे ना, 90 का बेस क्या, ये फालतू बात बोल रहा है, दिस मीन्स थिंग लाइक देखो ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। कभी भी आप इस एंगल का बेस लगाओगे मतलब आप कभी इस फॉर्मेट में लिखते हो तो साइन हमेशा चेंज हो जाएगा कॉस में, और इसका उल्टा होगा, कॉस हो जाएगा साइन में। ऑलराइट, कभी भी आप 180 का बेस लिखते हो तो ये वही का वही रहेगा एज इट इज।
तो 180 वाला केस मैं कुछ क्वेश्चंस में कवर करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अभी नहीं आ रहा होगा। तो अभी एक एज ऑफ नाउ 90 का याद रखो। tan का हो जाएगा cot, cot का हो जाएगा tan, sec का हो जाएगा cosec, cosec का हो जाएगा sec। और ये कुछ फॉर्मूले हैं, इसका यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि sin x इज इक्वल्स टू cos x प्लस 45। आपको बताना है x का वैल्यू क्या होगा इफ दिस इज एन एक्यूट एंगल, दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसका थोड़ा सा यूज है क्वेश्चन वाले पार्ट में, मैं इन सारे क्वेश्चन को कवर करूंगा, डोंट वरी। बट यस, यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला। एंड द लास्ट पार्ट इज विच इज द फिफ्थ वन इज द लाइफ सेविंग फार्मूला। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन प्रूविंग आइडेंटिटीज, एंड बेसिकली ये 4 नंबर में ही आता है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो फॉर्मूला याद रखना वो तीन ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। इसको आप तीन तरह से डिड्यूस कर सकते हो, सॉरी दो तरह से। नाउ यू कैन सी द फर्स्ट वन, मैंने कॉस को इधर रखा, साइन को इधर भेज दिया, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखा, कॉस को उधर भेज दिया, तो ये ऐसा हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, क्वाइट इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ऑलराइट, अगर कोई इसका प्रूफ बोलता है तो यू कैन टेक अ ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल, बेसिकली अ राइट एंगल ट्राइंगल, टेक एनी रैंडम वैल्यूज और टेक इवन द वेरिएबल्स, लाइक ले लो 3 4 5। ओके, नाउ ट्राई टू फाइंड, लेट्स से दिस इज योर a or theta, anything. Try to find sin theta, which is coming out to be, which is sine some people have, people 4, hypotenuse 5. So this is coming out to be 4 by 5. And similarly find cos theta, which is curly brown here. So this becomes 3 by 5. Now put the square here. So sine square becomes 16 by 25 and cos square becomes 9 by 25. So if you add it, this will be 25 by 25, which is nothing but 1. Alright, so same as you can prove all the other results, but I don't think this is that much important. The important thing is that you should remember the formula और इसको apply कैसे करना है, that is very crucial. Okay, so मैं कुछ questions भी उठाऊंगा जो काफी ज्यादा important है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिकली लास्ट ईयर के questions, तो उससे काफी आइडिया आपको मिलेगा। बट yes, you should remember the formula first, as I always tell. Okay, now second जो है वो क्या बोलता है, इसमें बोलता है sec square theta is equals to 1 plus tan square theta। अगेन इसको दो तरह से लिख सकते हो, this is given है। एंड द थर्ड थिंग इज cosec square theta is equals to 1 plus cot square theta, एंड ये कुछ इसका दो तरीके से लिखने का है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दो गाइस, एंड बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे कि आपको सारे लेटेस्ट वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, सो लेट्स एंड दिस वीडियो नाउ। थैंक यू, टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।